So this is the part 6 of the 100 one-liner series in pharmacology. Now see students, I am working more than I think matlab my capacity, and I am doing it all for you. So please go through all the videos because PDF दूंगी तो PDF से तो आप ठीक है रिवीजन कर लोगे, लेकिन एवरी क्वेश्चन के साथ जो मैं साथ में फार्माकोलॉजी की एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो नहीं मिलेगा आपको PDF में ना. So please go through the videos once and then you study from the PDF. That is going to be really helpful to you. So here is the part 6. Coming to the part 6 of the 100 one-liner series in pharmacology. Now we see CNS here. So which of the following is a nootropic drug? Nootropic drug is a drug which actually increases the cognition. So here we have the answer is piracetam. The drug found to be beneficial in amyotrophic lateral sclerosis. Earlier we had seen another drug. This is riluzole. Anti-Parkinson's drug known to cause cardiac valvular fibrosis is pergolide. So pergolide is known to cause fibrosis also. Now carbamazepine, if added to valproate, will result in increased hepatotoxicity. Remember this. Gender specific adverse effect of valproate is that it causes PCOS. Then a female on anti-epileptic therapy gets married. Now when should the folic acid supplementation be advised? So any person who is taking anti-epileptic gets married, now they're going to plan children. So in that case, all the women who want to become pregnant and who will become pregnant should start with folic acid immediately. Anticonvulsant drug which causes visual field contraction is vigabatrin. So vigabatrin, visual VI, visual say viga, remember that. Which is a treatment of juvenile myoclonic epilepsy in pregnancy. तो प्रेगनेंसी में जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी अगर पेशेंट को है तो देन यू गिव हर levotiroxetan. Carbamazepine causes hyponatremia in elderly. The drug of choice in treatment of infantile spasms is ACTH. Remember this. Drug of choice in trigeminal neuralgia is carbamazepine. Carbamazepine is given for, these are non-epileptic uses of carbamazepine. Drug of choice for myoclonic seizure is valproate. Then which drug is used to treat status epilepticus? Status epilepticus मतलब emergency condition, तो उसमें we give IV diazepam. Osteomalacia is adverse effect of phenytoin. अब phenytoin में देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है. एक तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आता है, सैचुरेशन काइनेटिक्स में आता है. सेकेंडली इसकी टॉक्सिसिटीज़ होती हैं गम हाइपरट्रॉफी, हिर्स्यूटिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ऑस्टियोमलेशिया, ये सारी इसके जो फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम अगर प्रेगनेंसी में ले लिया. सो फेनेटॉइन इज़ अ वेरी वेरी फेवरेट ड्रग ऑफ एग्जामिनर्स. Drug of choice in complex partial seizure is carbamazepine. Anti-epileptics which are used as analgesics. So we use carbamazepine and valproate also. So like carbamazepine is used in trigeminal neuralgia, in neuropathic pain. Valproate is also used. So these are the drugs which are used as painkillers also. Folate deficiency occurs due to phenytoin. Drug of choice for absent seizure is ethosuximide. Always remember absent में E आ रहा है, ethosuximide का E. So it is used in ethosuximide. Lamotrigine, the most common side effect of lamotrigine, this is a common question, is rash. Drug of choice for a patient with combination of generalized tonic-clonic and absent seizure, we use valproate. अब इसमें देखो ध्यान रखो, valproate जो है बहुत कॉमनली यूज दवाई है. ये जनरलाइज टोनिक-क्लोनिक में भी यूज़ होती है, ये पेटिट पाल में भी यूज़ हो जाती है, एब्सेंट में भी यूज़ हो जाती है. तो वेलप्रोएट हैज़ गॉट मल्टीपल मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन. ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल कन्वल्शंस इन एक्लेम्शिया. एक्लेम्शिया में हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट. ऑफ लेबल यूज ऑफ टोपिरामेट इज अल्कोहल डी एडिक्शन. रिमेंबर दिस. टोपिरामेट इज एन एंटी एपिलेप्टिक बट ऑफ लेबल यूज ये अल्कोहल के डी एडिक्शन में भी होती है. Drug of choice for tonic-clonic seizure is sodium valproate. Drug of choice for myoclonic seizure is sodium valproate. A patient on lithium therapy developed hypertension, so he was started on thiazides. After some days, he developed tremors and other symptoms which suggested lithium toxicity. Now, what is the likely mechanism? तो यहाँ पे thiazides ने interact करा है lithium के साथ, और lithium का जो excretion है
उसको कम किया है, उसका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया. सो एज अ रिजल्ट लिथियम गॉट रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द किडनी एंड कॉज्ड टॉक्सिसिटी. एंड एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लिथियम हैज़ गॉट अ वेरी नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स. Now, a patient was started on flufenazine. Few weeks later, he developed tremors, bradykinesia, and excessive salivation. So, what is the management? Now, flufenazine is an antipsychotic drug. अगर कुछ दिनों बाद एंटीसाइकोटिक ड्रग के बाद ये जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ये सब, तो ये बेसिकली हमें इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देनी होती है. सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक ट्राइहेक्सीफेनिडिल इज गिवन इन दिस पेशेंट. Which is not an adverse effect of escitalopram. Escitalopram is an antidepressant. It does not cause cialorrhea. Among the following antipsychotics, sedation is maximum. Just remember this, thioridazine causes maximum sedation. First line treatment for arrhythmias due to amitriptyline. Amitriptyline की poisoning अगर होती है, high dose हो गई, toxicity हो गई, तो इसमें हम IV सोडा बाइकार्ब देते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एमिट्रिप्टिलीन पॉइजनिंग. नाउ अ 21-year-old स्टूडेंट इज टेकिंग रिस्पेरिडोन फॉर सीजोफ्रेनिया सिंस लास्ट 2 months. नाउ पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीजोफ्रेनिया. हाउ लॉन्ग पेशेंट विल हैव टू टेक दिस ड्रग? सो हाउ लॉन्ग ही विल हैव टू टेक? 12 months, एटलीस्ट 12 months ऑफ सिम्टम रेमिशन. सिम्टम्स ठीक होने के बाद 12 महीने तक उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग लेना पड़ेगा. A young girl on antidepressant therapy presented to emergency with these symptoms. Now there is wide QRS interval. What is the next best step? तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट वो ले रही है, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है. सो अगेन यहाँ पे हम IV सोडा बाइकार्ब देंगे पेशेंट को. A patient of schizophrenia started on haloperidol 5 mg. Next day he presented with uprolling of the eyes and there is no other abnormality, visual acuity normal. So then this is acute dystonia. जब पहले डोज के बाद ही साइड इफेक्ट आता है तो उसको बोलते हैं अक्यूट डिस्टोनिया. अ पर्सन टेकिंग ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट प्रेजेंट्स विद ब्लर्ड विजन, ड्राई माउथ, देन दीज एडवर्स इफेक्ट्स रिजल्ट ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ. क्यों हो रही है ये सब? क्योंकि यहाँ पे जो ये एंटीडिप्रेसेंट्स होते हैं साथ में इनके एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी भी होती है. सो दे आर ब्लॉकिंग दी M3 मस्करेनिक रिसेप्टर्स एंड कॉजिंग दिस प्रॉब्लम. बेस्ट एजेंट फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मैनेजमेंट इज SSRI. अगर किसी को PMS जिसको बोलते हैं ना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट पैथोलॉजिकल एंड अफेक्टिंग द पेशेंट, देन पर्सन शुड टेक SSRI फॉर इट. विच एजेंट इज नॉट अ सेरोटोनिन एंड डोपामिनर्जिक ब्लॉकर? सेरोटोनिन एंड डोपामिनर्जिक ब्लॉकर नहीं है, दैट इज डॉक्सिपिन. इट इज़ मेनली एक्टिंग ऑन अदर रिसेप्टर्स. डिप्रेशन में देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 5-HT. वी ऑल नो दैट सेरोटोनिन डेफिशिएंसी होने से डिप्रेशन होता है. लिथियम इज यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ MDP, दैट इज मेनियक डिप्रेसिव साइकोसिस. ड्रग ऑफ चॉइस इन इंट्रैक्टेबल हिकअप्स इज, इंट्रैक्टेबल हिकअप्स में द ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोरप्रोमजीन. ड्रग हैविंग प्रोवन एफिकेसी इन बाइपोलर डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन में द ड्रग विच वी यूज इज लैमोट्रिजिन. Drug of choice for rapid cyclers in manic depressive psychosis is valproate. Which drug can cause hypertensive crisis in a patient on MAO inhibitor therapy? So the drug which can cause hypertensive crisis in a patient on MAO inhibitors is tyramine. This I think you all can understand that tyramine reaction होता है, MAO inhibitors होते हैं, तो वो basically उसका जो हाइड्रोलिसिस है कैटेकोलामीन्स का, उसको इनहिबिट करके रखते हैं. टायरामिन आने से एक्सटेंसिवली टायरामिन डिस्प्लेसेस नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम द स्टोरेज वेसिकल्स एंड रिलीजेस देम कॉजिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस. विच ड्रग ट्रीटमेंट इंक्रीजेस थर्स्ट एंड कॉज डायरेटिक dilute diuresis? So that is lithium. Lithium increases the thirst. Which is an atypical antipsychotic? It is clozapine. Remember clozapine, the most common side effect of clozapine is agranulocytosis and it is mainly used in refractory or resistant schizophrenia. Drug useful in malignant hyperthermia. Malignant hyperthermia और एक और चीज़ होती है न्यूरोलेप्टिक malignant syndrome. इन दोनों में हम IV डेंट्रोलिन यूज़ करते हैं. डेंट्रोलिन एक्चुअली इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. So malignant syndrome caused by haloperidol and here also we use dantrolene.
Which drug should not be given with tyramine as it may result in dangerous reaction? That is tranylcypromine. So remember the tyramine, tranyl ka Y, Ty. So remember like that. Which antidepressant causes urine retention? That is imipramine. So that is a side effect of imipramine, which is an antidepressant, that it also causes urine retention, and that is why this drug was also recommended in children who were wetting the bed or nocturnal enuresis mein. Then antidepressant drug which can be safely used in children is fluoxetine. Now which is not an antipsychotic? So there were many drugs given. आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे 4 ड्रग दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कौन सी एंटीसाइकोटिक नहीं है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रिमेंबर करना है. देखो फ्लूऑक्सेटिन एंटी डिप्रेसेंट है, एंटीसाइकोटिक नहीं है. लॉन्ग टर्म एंटीसाइकोटिक यूज में कॉज, लॉन्ग टर्म जब एंटीसाइकोटिक चलता है तो एक्स्ट्रापिरानल सिम्टम्स डेवलप होते हैं जिसमें टार्डिव डिस्काइनेजिया करके सिम्टम रहता है विच इज़ प्रेजेंटिंग, जिसमें एक इनवॉलंटरी पफिंग ऑफ द माउथ, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं. मोक्लोपेमाइड इज अ माओ इनहिबिटर. Pimozyte belongs to the class of diphenylbutylpiperidine. So this is pimozyte. Antipsychotic drug with longest elimination half-life is aripiprazole. Remember this, aripiprazole has the longest half-life. Which medication is associated with increased risk of agranulocytosis? That is clozapine. Drug of choice for treatment of negative symptoms of schizophrenia is clozapine. Drug of choice in nocturnal enuresis is desmopressin, which is a late side effect of typical antipsychotic. It is again tardive dyskinesia. Now antipsychotics they cause weight gain, and that is because of antagonism of 5-HT2C receptor. Drug of choice in lithium induced polyuria is amiodarone, which is not an SSRI. Again here you will get multiple choice questions and then you have to understand which is not SSRI. So amitriptyline is not an SSRI, it is a tricyclic antidepressant. Drug with both antidepressant and antipsychotic properties is amoxapine. Remember this. This drug has got antidepressant plus antipsychotic properties, both. Drug of choice in OCD is sertraline. Now which is the treatment of choice for patients with schizophrenia who refuse to take treatment? मतलब वही resistant schizophrenia बोलो, flufenazine. Which drug of choice for maintenance therapy of bipolar disorder? That is lithium. Now again it is a case of a patient taking antipsychotic and he presents to the emergency with some problems. So what is the likely diagnosis? तो जैसे उसके difficult spasm of neck हो गया है तो ये acute dystonia हो गया. Drug of choice for manic depressive psychosis is lithium. Drug of choice for obsessive compulsive disorder is fluoxetine. Sertraline is also given, fluoxetine is also given for OCDs. Now a patient of biliary colic, he presents to the hospital. He is given an injection for this pain and the situation worsens. So what is the drug which is given? तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, पेन के लिए डेफिनेटली वहाँ पे इंटर्न ने उसको मॉर्फिन दिया होगा और मॉर्फिन जो है बिलियरी कॉलिक को और बढ़ाता है, इट कॉजेस स्पैज्म, मोर स्पैज्म. सो बिलियरी कॉलिक में इट इज़ टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ऐसे केस में सबसे पहले आप सिंपल एनाल्जेसिक दो और अल्ट्रासाउंड करके देखो व्हाट इज़ द इशू. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्कोहल विड्रॉल. नाउ अल्कोहल विड्रॉल में वी यूज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोरडाइजिपॉक्साइड, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस टू मैनेज द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, दैट इज डाइजिपाम. Opioid addiction में drug used in maintenance therapy is methadone. Please remember this question came in the NEET PG 2024. I've also covered in my earlier video of recap NEET PG 24 that the drug which is used for maintenance therapy in opioid de-addiction therapy is methadone because it reduces the withdrawal symptoms of morphine. Angel dust is phencyclidine. Again a very favorite question. A patient presents with pain in the right quadrant of abdomen, history of renal stones. अब he is given a opioid which is an agonist at kappa receptor and antagonist at mu receptors. So the likely drug given is pentazocin. This is again you have to remember the names of receptors mu, kappa, delta receptors of opioid. Dysphoria caused by opioids
is mediated by kappa receptor. Now, preferred drug for alcohol withdrawal seizures is diazepam. So earlier I told you chlordiazepoxide is the drug of choice, but for controlling the acute seizures, you have to use diazepam. Which drug is contraindicated in renal failure? It is pethidine. Following symptoms may be seen in opium withdrawal, that is lacrimation. The symptoms that can be seen in opium withdrawal can be lacrimation. In alcohol withdrawal, the drug of choice is chlordiazepoxide. Characteristic feature of opiate withdrawal is lacrimation and rhinorrhea. Drug of choice for controlling severe pain in cancer patients is morphine. That is the only drug. Antabuse is a drug which is used in alcohol withdrawal. It inhibits the oxidation of alcohol, so it produces like unwanted effects. The drug acamprosate is therapeutically used for maintenance therapy of alcohol abstinence. So please remember acamprosate, acam ए का ए अल्कोहल के एब्सटिनेंस के लिए यूज होती है. Disulfiram and acamprosate are used for alcohol abstinence. Opioid analgesics used in treatment of cough, we all know that is codeine, which is 100 times more potent than morphine. Morphine से 100 times ज़्यादा potent होती है fentanyl. Opioid receptors, they act in the dorsal horn. Opium is a derivative of papaver somniferum. Opioids and opiates में difference होता है कि ये opiates जो है synthetic derivatives होते हैं. Drug used for pain control is morphine, fentanyl. Morphine also used in left ventricular failure patients. Opioids that activate monoamine action is tramadol. Hallucinations, psychosis, hypertension, tachycardia are seen with pentazocine. Disulfiram reaction is because of inhibition of aldehyde dehydrogenase. This is a very common question. Please don't confuse it. Aldehyde dehydrogenase. उसमें option में आएगा aldehyde hydroxylase, alcohol dehydrogenase. आप confuse हो जाओगे. So remember, aldehyde dehydrogenase is the enzyme which is inhibited by disulfiram. Drug of choice for prophylaxis of mania is lithium. Derivative of morphine used in diarrhea, this is diphenoxylate, and diphenoxylate के साथ में हम ऐड करते हैं atropine. Why? Because it reduces the abuse liability of diphenoxylate. Drug of choice in neuroleptic analgesia is droperidol plus fentanyl, and drug of choice in neuroleptic anesthesia is droperidol plus fentanyl plus N2O. Drug of choice for daycare surgery is propofol. Malignant hypothermia and neuroleptic malignant syndrome, it is treated by dantrolene. Enflurane is strictly contraindicated in epilepsy. Remember that enflurane is contraindicated in epilepsy. Then what is used in IVRA? IVRA or Bayer's block, इसमें the drug of choice is prilocaine. So with that we come to an end of 100 one-liner series in pharmacology. Now as you can see, I have started with anesthetic pharmacology. So next I'll be completing this anesthetic pharmacology. Then we have hematology and respiratory and GIT I'll be completing in the next series. After that we'll take the antibiotics, anti-cancer agents, immunomodulators and miscellaneous. So I think I'll be able to complete the remaining portion in around 3 more part of one liner series.